Welcome. As I said, I've already said, it's so nice to have a Zoom session, a Silver Sunday. I know all of y'all have. I know Geetanjali, Deepu, Anjali, all of us have missed meeting y'all, having the Silver Sunday sessions. So I'm glad at least we can start with Zoom, and God willing, hopefully we pray that we can start with our Silver Sunday sessions. Hopefully once the government allows us and the rules change and everybody's safe and we can get back to normal. But thank you. The response has been amazing to see everybody around. So we will start. We have an agenda today and it is full. It's going to be fun. I'm going to let Geetanjali give us the whole agenda. But for now, let's start with the 3 Gayatri mantras. And as we know, the pandemic has been very challenging for all of us. We have lost some very near and dear ones, and our heart is very heavy. So I pray that we are all well, and the loved ones that we have lost through this pandemic, we'll do a 1-minute silence. And one that we lost is our dear committee member, Pete Ragwani, his dad. It's even difficult to say how we will miss him. So I think I'm going to pray. We are all going to pray. May his soul rest in peace. And he's with us. We did say we will start the Zoom sessions. We will do the Silver Sunday, and we are going to be committed to continue with Silver Sunday sessions. So let's start with the 3 Gayatri mantras. We will do 3 Trayambaka mantra, and we'll have a minute's silence for all the dear ones we've lost through this pandemic. Om Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Vardhanam Urvarukmeva Bandhana Mrityurmokshya Mamritat. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarukmeva Bandhana Mrityurmokshya Mamritat. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarukmeva Bandhanat Mrityurmokshya Mamritat. May we have 1 minute silence. May we remember and thank Pete for being in our lives, and thank Silver Sunday to be a part of our lives. Thank you. And for the people who've left us, please remember them in your prayer. 1 minute silence.
Good morning, everybody, and welcome to our Silver Sunday on Zoom. For our next speaker, there's no real need for introduction. Many of us in the community know him very well. Our CEO of the SadhuVaswani Centre London, Mr. Deepu Mirpuri. Deepu has been a part of the SVC for over 30 years and has essentially been the lifeblood of the organisation. No task is too big or too small. We appreciate Deepu's commitment, and I now pass over the screen to him. Thank you. Thank you, Anjali. Hare Krishna. Good morning, everyone. I hope you're all well and looking forward to a fun-filled program. Welcome to our first Silver Sunday since the start of the pandemic and our first ever Silver Sunday on Zoom. We're definitely going high-tech. This morning, we're going to talk about organ donation. It's a subject many avoid discussing and others are too confused and have a whole lot of questions to ask. SadhuVaswani Centre UK is privileged and honored to be a part of this latest community-based organ donation campaign. We would like to thank everyone who've made this possible, especially Ms. Prafulaben Shah for arranging it for us and organizing our guest speakers. Thank you very much. Please don't look at your organ donation as a grand gesture. Instead, see it as a humble, generous gift that God has allowed you to give. Friends and family, for the last 14 months, we've been applauding the NHS frontline staff. We owe a debt of gratitude to them for their dedication and unwavering commitment to bringing us all back to health. And it's thanks to them that the government is able to ease the current lockdown restrictions. Just give them a round of applause. On this occasion, you didn't have to wait at the front door. You could do it on Zoom. Despite their busy schedules, 2 members of the NHS medical team are here with us today to explain the importance of organ donation. After both speakers, there'll be an opportunity for you to ask questions. If you like, you may type your question in the chat box or raise your hand, but only do that after both speakers have finished, because they may actually answer the question that you have. I hope that's okay. Yeah, so let me not eat into any more of the speaker's time. Our first speaker this morning is Dr. Krishna Menon. He specializes in liver transplants and has a particular expertise in laparoscopy, which is keyhole surgery for liver, gallbladder, and pancreas. He is Vice President of the British Transplantation Society, the National Counsellor for Liver Transplant on the British Transplantation Society, and the National Counsellor on the Great Britain chapter of the International HPB Liver Transplant and Biliary Association. Dr. Krishna has been a consultant surgeon for over 17 years and is currently at King's College Hospital. He is a recognized international expert in his field. He also has a number of publications related to his expertise and has been invited on many platforms to demonstrate his technique on the international stage and also on the UK stages. And today, I'm delighted he has taken some time out to join us. Before we started this meeting, we had a little chat with Dr. Krishna, and I understand he has just been working this morning with the patient. So we are really privileged that he has been able to find time to join us. Doctor, we thank you. And on behalf of SadhuVaswani, we welcome you
to the Silver Sunday meeting. The platform is yours. Hare Krishna. Thank you. Thank you, Hare Krishna. I shall first share my screen and get that done. Hopefully you can see my screen now. Yes, thank you. Yes, thank you. So, good morning to everybody. Namaskar. We would say Hare Krishna, Radhe Shyam, your local greeting. My first thanks is for the invitation and to come and speak to you all on this important subject, which I'm glad to say that, a lot of communities, Asian communities are taking an interest in it and want to know more about organ donation. And that is really nice from our point of view, from the transplant community. So, Adaraniya Mr. Deepu Mirpurji, and all the respected guests from the elderly community who have joined us today, and the ladies and gentlemen who are on the show who want to know more about organ donation. My aim today is going to be try and give you a flavor of what is organ donation. अंगदान यानी क्या होता है, अंगदान में क्या करना चाहिए, अंगदान समझने के लिए क्या क्या जानना चाहिए आपको, और अंगदान करने के लिए आप कहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, अंगदान करने के बाद क्या होता है आपकी फैमिली के साथ, अंगदान से आपके जो डोनेशन की वजह से दूसरी फैमिलीज पे क्या असर होता है, ये सब हम आपको दिखाना चाहते हैं आज, ताकि आप आज के इस विषय के डिस्कशन के बाद घर जाए तो सोच सके कि मेरे वजह से किसी को फर्क पड़ सकता है। तो हम शुरुआत करेंगे कि कहां से ये कहानी शुरू हुई थी। ये कहानी शुरू हुई थी 1954 में। 1954 में पहला सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था दो आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में। ये हुआ था पीटर बेन ब्रिंघम हॉस्पिटल बॉस्टन में। कई साल हो गए, अब हम 2021 में हैं, पर ये जो क्रिटिकल स्टेप था जहां पहले हमने सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट किया, इसकी वजह से जो सर्जन्स ने ये जो ऑपरेशन किया था उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला, और नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद ट्रांसप्लांटेशन में काफी सारे एडवांसेस हुए हैं। ये सर्जन्स थे जोसेफ मरे, हार्टवेल हैरिसन और जॉन मेरिल। तीनों सर्जन्स को नहीं मिला पुरस्कार, पुरस्कार मिला जोसेफ मरे जो सीनियर सर्जन थे। ये जो पुरस्कार मिलने के बाद ट्रांसप्लांटेशन में जो फर्क पड़ा वो इसलिए हुआ क्योंकि सक्सेसफुल था। और आजकल हम लोग ट्रांसप्लांटेशन के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन ऑलमोस्ट रूटीन हो गया है। पर जो काम करना चाहिए हमको वो है कि भी ऑर्गन्स के लिए। याद रखिए कि ये जो डोनेशन हुआ था ये दो आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में हुआ था, जहां एक भाई ने दूसरे को किडनी दिया था। अभी डोनेशन जो है वो लाइव डोनेशन की नहीं, बट काफी सारे तरीके से आप डोनेशन कर सकते हैं। तो पहली बात यह है कि क्यों करना चाहिए अंगदान, अंगदान करना क्यों चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको समझना चाहिए कि भाई अंगदान यानी क्या होता है। लोग घबरा जाते हैं अंगदान सोच के कि भाई मैं अंगदान क्यों करूं। और हमारे हिंदू संस्कार में ये भी है कि आत्मा के विषय में बात होती है। लोग जब जीते हैं तब बोलते हैं कि मरने की क्यों बात कर रहे हैं अभी आप। घर पे भी हम लोग मरने की बात नहीं करते, और मरने के बाद क्या होगा ये सब बात मत करिए क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। तो आप अवॉइड करते हैं ये सब्जेक्ट को। तो इसके लिए अंडरस्टैंड करना चाहिए कि भाई अंगदान क्या होता है, कौन से अंग आप डोनेट कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। और फिर उसके बाद हम आपको हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस थोड़े शेयर करेंगे, बोथ एज अ ट्रांसप्लांट सर्जन एंड एज अ नॉन ट्रांसप्लांट सर्जन, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। और उसके बाद हम आपको हमारी पर्सनल थोड़ी स्पिरिचुअल गाइडेंस और फिलोसॉफिकल अप्रोच अंगदान के विषय में हम आपको बताएंगे कि क्यों करना चाहिए हमको
इस जिंदगी में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि क्यों करना चाहिए इज बिकॉज द हैप्पीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड आर गिवर्स नॉट टेकर्स। आप अगर देते रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, आप लेते रहेंगे तो ना खुश रहेंगे, क्योंकि आपके पास कुछ देने के लिए नहीं होगा, आप एक्यूमुलेट करते रहते हैं और आप नाखुश रहेंगे। तो सिंपलेस्ट रीजन इज कि देने वाले हमेशा खुश रहते हैं। तो वो एक सिंपल रीजन है कि क्यों करना चाहिए आपको अंगदान। अब दूसरी बात ये है, लेट अस टॉक अबाउट द मेडिकल साइड ऑफ इट। व्हाई इज इट दैट आपको एशियन कम्युनिटीज में हमको ये चीज समझना बहुत ही जरूरी है। हमारे कम्युनिटी में इंसिडेंस ऑफ किडनी फेलियर काफी ज्यादा है दूसरे कम्युनिटीज से ज्यादा। और उसमें क्यों है? एशियंस में 3 to 4 टाइम्स मोर रिस्क है किडनी फेलियर डेवलप करने के लिए, क्योंकि हमारे एशियन कम्युनिटीज में डायबिटीज का रिस्क काफी ज्यादा है। एंड दैट इज इनेट, वो हमारी जेनेटिक है, थोड़ी हमारी डाइटरी हैबिट्स जो है उसकी वजह से हमको ज्यादा डायबिटीज का रिस्क है। डायबिटीज के रिस्क की वजह से आपकी किडनीज को डैमेज होती है, किडनीज के डैमेज के होने के बाद किडनी फेलियर हो सकता है। ब्लड प्रेशर की बीमारी अगेन पार्टली डाइटरी है, पार्टली हम लोग हमारी जो जीने की लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हमारे पॉपुलेशन में ब्लड प्रेशर की ऊंचाई की रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन, वाइट पॉपुलेशन जो कॉकेशियन पॉपुलेशन बोलते हैं उनसे 2 गुना है। तो ये सब वजह से आपको किडनी फेलियर की ज्यादा रिस्क है। अगर आप जानते हैं कि किडनी फेलियर होने के बाद आपको डायलिसिस पे जाना पड़ता है। अगर आप सोचे ये कि आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, आप सुबह से शाम आपका काम करते हैं, अस्पताल या ऑफिस या जहां भी आप काम करते हैं, पर ये सोचिए जो मरीज जो है उनको डायलिसिस करना पड़ता है हफ्ते में 3 बार 4 से 5 घंटे अस्पताल में जाके सुई लगा के बैठना पड़ता है मशीन के पास ताकि उनको डायलिसिस मिले। ये जो दर्दी है जिनके किडनी जो फेल हुए हैं, हर हफ्ते आपकी हर जिंदगी, और कई लोग 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल तक वेट करते हैं ऑर्गन के लिए ताकि वो मशीन से बाहर निकल सके, अपनी खुद की जिंदगी जी सके। तो ये स्लाइड जो है ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है कि आपके अपने कम्युनिटी में इस रिस्क की वजह से आपको डोनेशन करना चाहिए। अब ये जो स्लाइड है आप गौर से देखिए इसको। बेम यानी ब्रिटिश एशियन एंड माइनॉरिटी एथनिक जो कम्युनिटी है, आपके एलिजिबल डोनर्स कितने हैं? 500 करीबन, ठीक है। उनमें से रिक्वेस्ट आते हैं 300 करीबन, उनमें से डोनर्स एक्चुअली होते 270, ठीक है। ट्रांसप्लांट पेशेंट्स कितने हैं? 1000 के ऊपर। वेटिंग लिस्ट कितने हैं बेम के? नियरली 2000। तो ये स्लाइड को आप गौर से देखिए कि 270 और 2000 गैप कितना है, काफी है ना। तो ये आपको सोचना चाहिए कि ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम आपको इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो और कोई नहीं करने वाला है हमारे लिए। आप अगर कुर्सी में बैठ के बोले कि हाँ हम तो डोनेशन लेंगे, जब ऑर्गन आएगा तब करेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपसे। आप, मैं, हम, ये सब हमारी प्रॉब्लम है। ये स्लाइड को इसलिए आप गौर से देखिए कि कितना गैप है ऑर्गन डोनेशन और हमारे जो अपने आदमी लोग वेटिंग लिस्ट पे है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। यही जो ग्राफ है वही दिखाती है कि ये जो डॉटेड लाइन है ऊपर जो है वो नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट वेटिंग लिस्ट है सबसे ऊपर, और जो पिंक में है वो जो ट्रांसप्लांट्स है, और डोनर्स जो है वो पर्पल में है। देखिए कितने कम है बेम डोनर्स, बहुत ही कम है। वी कैन डू मोर, वी कैन डू बेटर। दूसरी बात जो होती है, हम बोलते हैं कि हमारे रिलीजन में बोलते हैं कि डोनेशन इसका नहीं करना चाहिए, हार्ट का डोनेशन नहीं करना चाहिए, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये सब भ्रम है। There are several religions in this world, but no religion states, no religion, that organs should not be donated. This is a myth. ये भ्रम है आपका और हमारा और हम सबका, जो निकाल देना चाहिए अपने दिमाग में से कि रिलीजन की वजह से आपको डोनेशन नहीं करना चाहिए। कहीं नहीं लिखा है। आप
गुरु ग्रंथ साहब का देखिए, the true path to God lies in the service of our fellow human beings. This is service of our fellow human beings. If you look at Jesus Christ, he said it is more blessed to give than to receive. If you look at Bhagavad Gita, what does Bhagavad Gita say? The Bhagavad Gita says something very important. You came with nothing. You came with nothing. So therefore, if you're going to give something, you came in empty-handed. What is yours today belonged to somebody else yesterday and will belong to somebody else tomorrow. This is donation. This is what it's about. We come, we go. But what you do when you go and give life to somebody else is equally important. Same way, if you look at the Muslim community, and we talked a lot to that, and one of my close friends, Niaz Ahmed, does lecture a lot on this. Give to those who have never given anything to you. So it's all about giving, and that's what donation is about. So again, just to reinforce, no religion states that organs should not be donated. So what are the key reasons? सबसे important reason ये है कि आप दूसरी व्यक्ति का जान बचा सकते हैं. और दूसरी बात जो आप लोग जानते नहीं होंगे शायद, कि अगर अपने एशियन कम्युनिटीज में आपको किडनी ट्रांसप्लांट, आपके कोई लव्ड वन को किडनी ट्रांसप्लांट चाहिए, तो वो जो किडनी आपको डोनर में से मिलेगा जो कॉकेशियन होगा, उसकी मैचिंग कम होती है. आपके खुद के डोनर्स में से जो मैचिंग मिलती है, उसका मैच जो बोलते हैं रिजेक्शन के चांसेस कम है. तो दूसरी एक इंपॉर्टेंट रीजन है जो आपको डोनेशन करना चाहिए आपकी खुद की कम्युनिटी के लिए भी. एंड यूके में तो आप जानते हैं कि काफी लोग ऑर्गन के लिए वेट करते, उनकी जान चली जाती है. और वेटिंग लिस्ट जो होती है, जो हमने बताया आपको, 1 in 5 पीपल जो वेटिंग लिस्ट में होते हैं वो मरते हैं, वो बेम कम्युनिटी में से होते हैं. तो अपने वाले ही जा रहे हैं क्योंकि उनको ऑर्गन नहीं मिल रहा है डोनेशन के लिए. एंड ऑफ द 6,000 ऑन द वेटिंग लिस्ट, 17% साउथ एशियंस है. अब हम आपको ब्रीफ फ्लेवर देंगे ऑर्गन डोनेशन के बारे में, कि डोनेशन आपने सुना होगा, कई तरीके से आप डोनेशन कर सकते हैं. और ये जो डोनेशंस हैं, या तो आपका जो ब्रेन है वो डेड होने के बाद आप डोनेशन कर सकते हैं. दूसरी डोनेशन की तरीका जो है वो बोलते हैं हम डोनेशन सर्कुलेटरी डेथ के बाद. और तीसरा, आप जीते जी, जैसे प्रफुल्ला बहन जो शो पे हैं वो आपको बात करेंगे, जीते जी आप आपका अंग दान कर सकते हैं दूसरों के लिए. अब ब्रेन डेथ जो होता है वो एक प्रिसाइज टेस्ट है, जहां हम लोग डॉक्टर्स जो होते हैं वो असेस करते हैं कि ब्रेन को कोई फंक्शन नहीं है. और ये जो टेस्ट जो करते हैं वो हम ट्रांसप्लांट सर्जन नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. ये जो करते हैं टेस्ट वो दूसरे इंटेंसिव केयर यूनिट डॉक्टर्स है, जिनको ऑर्गन डोनेशन से लेना देना कुछ नहीं है. तो वो लोग टेस्ट करेंगे आपके लव्ड वन को और बताएंगे आपको कि भी अभी उनका ब्रेन में कोई फंक्शन नहीं है, तो वो सपोर्ट के बिना जी नहीं सकेंगे. तो उनको लीगली कंफर्म करते हैं कि ये ब्रेन डेड है. और उस टेस्ट खत्म होने के बाद जो ब्रेन के टेस्ट हैं, और हम लोग ब्रीदिंग का भी टेस्ट करते हैं कि आपको ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका ब्रेन डेड है, उसके बाद आपको डोनर कहा जाता है. और फिर आपके ऑर्गन्स ऑफर किया जाता है कि जिनको नेशनली एलोकेशन के हिसाब से दिया जाता है. सर्कुलेटरी डेथ जो होता है वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है. उसमें ये है कि आपका जो लव्ड वन है वो आईसीयू में होंगे, और कोई भी वजह से उनको ट्रीटमेंट सब कुछ कर दिया आपने ट्रीटमेंट में, पर अगर वो डॉक्टर सोचे कि भी ये अभी मरीज जी नहीं पाएंगे, और उनके लिए अगेन हमको टेस्ट करने पड़ते हैं स्पेसिफिक. पर वो करने के बाद हम बोलते हैं कि ये जो मरीज है, आपके जो लव्ड वन है, उनके सपोर्ट विड्रॉ करने के बाद अगर आपका हार्ट बंद हुआ तो उसके बाद आप डोनर बन सकते हैं. ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और Q&A में हम आपको अगर पूछे आप तो हम ज़्यादा समझा सकते हैं. पर ये दूसरा तरीका है ऑर्गन डोनेशन का. और तीसरा जो है वो लिविंग डोनेशन है, कि आप जो आपके लव्ड वन को या रिलेटिव को आप ऑर्गन दे सकते हैं. इसमें आप लिवर भी दे सकते हैं, किडनी भी दे सकते हैं. अब लिवर जो होता है वो एक यकृत जो बोलते हैं हम, उसका जो एक अजीब सा एक एडवांटेज है कि लिवर रिजनरेट कर सकता है, ग्रो कर सकता है. और वो जो लिवर जो होता है उसके जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स, जो नंबर्स लिखे हैं उसके ऊपर, हर एक जो पीस है
वो अपने आप रीजनरेट कर सकता है और उसकी वजह से आप आपका ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं, किडनी भी डोनेट कर सकते हैं। बेनिफिट ये है कि आप डोनेट करो अपने एशियन माइनॉरिटी एथनिसिटी या किसी और को भी, तो वेटिंग लिस्ट में टाइम लोगों का कम होता है, उसकी वजह से आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। और हमने आपको जैसे बताया कि डायलिसिस में टाइम बर्बाद जो होता है, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होती है, उसको आप बचा सकते हैं ऑर्गन डोनेशन से। टोटली आप क्या क्या डोनेट कर सकते हैं? आप हार्ट डोनेट कर सकते हैं, लंग्स डोनेट कर सकते हैं, फेफड़े जो बोलते हैं, यकृत डोनेट कर सकते हैं, किडनीज डोनेट कर सकते हैं, पैंक्रियास और आपके जो अंतरे भी आप डोनेट कर सकते हैं। 9 लाइव्स जितने आप बचा सकते हैं एक डोनर के हिसाब से। सो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन। लॉ चेंज हो रहा है, इसके बारे में आपको एंजेला ज्यादा बात करेगी, तो हम आपको ज्यादा बात नहीं करेंगे कि ये ऑप्ट आउट क्या होता है और ऑप्ट आउट क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, और जो स्टोरी है वो आपको एंजेला बताएगी, इसलिए हम आपको ज्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में। और दूसरी जो है डोनेशन, वो बोलते हैं परोपकार डोनेशन कर सकते हैं आपके अंग का, उसका मतलब है अल्ट्रुइस्टिक ऑर्गन डोनेशन। और ये जो है कि भी आप डायरेक्टेड भी कर सकते हैं या नॉन डायरेक्टेड भी कर सकते हैं। यानी कि आप अगर बोले आज मेरे पास 2 किडनी है, मेरे को 1 किडनी डोनेट करना है, मुझे नहीं सिलेक्ट करना किसको डोनेट करना है, यूके में जो भी है जिनको किडनी की जरूरत है वो हम आपको डोनेट कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप डोनेट कर सकते हैं। डायरेक्टेड डोनेशन थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसमें हमको एज डॉक्टर्स देखना पड़ता है कि उसमें कोई फाइनेंशियल मोटिवेशन नहीं है आपको। तो आप बोल सकते हैं कि मेरे को डोनेशन करना है, पर मेरे को करना है तो इस पर्टिकुलर व्यक्ति को डोनेट करना है ना। मोर ऑफन देन नॉट वो जो डोनेशन होता है वो वेबसाइट अपील की वजह से होता है, डायरेक्टेड अल्ट्रुइस्टिक डोनेशन। आप लोग डोनेट क्यों नहीं, हम लोग डोनेट क्यों नहीं करना चाहते हैं? मोस्टली डॉक्टर्स को ट्रस्ट नहीं करते कई लोग, और कई लोग जैसे हमने बताया रिलीजियस बिलीफ्स की वजह से नहीं करना चाहते हैं, और कभी कभी डिस्कशन नहीं होता। जैसे मैं आपको आज बात कर रहा हूँ ऑर्गन डोनेशन के बारे में, अंगदान की वजह से आपको समझा रहा हूँ अंगदान क्या होता है और क्यों आपको करना चाहिए। ये जो अवेयरनेस है वो कम है, और huge credit to the SadhuVaswani community for actually doing this discussion, because this is how you improve the knowledge and this is how awareness जो आपका जो होता है बढ़ता है। आप समझने के बाद सोचते हैं एक्चुअली मुझे ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए। तो ये जो लैक ऑफ अवेयरनेस है उसकी वजह से भी आप कभी कभी नहीं करते हैं, कभी कभी मोटिवेशन नहीं होता है। आपको लगता है कि क्यों करना चाहिए मुझे, इसमें मेरे को जिंदगी में बहुत सारी चीजें करनी है, इसमें अंगदान कहाँ आता है। और कई बार समझने की भी नॉलेज भी चाहिए, और ऐसे जो टॉक्स होते हैं उसकी वजह से आपको नॉलेज बढ़ावा हो सकता है आपका नॉलेज का। और एंजेला आपको बताएगी कि आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं ऑर्गन डोनर के लिए। फैमिली का भी इम्पोर्टेंट है, और इसके बारे में प्रफुल्ला बहन कई बार बात करती है, और दूसरे लोग भी, कि आप लोग अगर डोनेट करना चाहते हैं तो प्लीज आपके फैमिली के साथ बात करिए, अपने आप अंदर अंदर मत रखिए, बात करिए, ओपन डिस्कशन करिए अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, ब्रदर्स सिस्टर्स, and then the chances are that when something does happen, if it were to happen to any loved one, a decision is very clear as to what needs to be done. क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे यूके में अभी भी फैमिली रेफ्यूजल रेट्स काफी हाई है, एंड इसकी वजह से हमको काफी सारा काम करना पड़ रहा है लोगों को समझाने के लिए कि भाई फैमिली के साथ प्लीज बात कीजिए कि आपका डोनेशन के व्यूज क्या है, आप डोनेट करना चाहते हैं तो मेक इट वेरी क्लियर टू देम। बाकी हम लोग आपसे विनती करते हैं कि आपने जो लीडर्स हैं कम्युनिटी में, जो इन्फ्लुएंशियल पीपल है, सब लोगों को मदद की जरूरत है, कि आप लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को। जैसे आज आप पिंक टी शर्ट पहन के आज ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं ऑर्गन डोनर्स बनने के लिए, इसी की वजह से आपके जो इन्फ्लुएंस होगा, आपके जो लोग कॉल पे है 70 or 100 people who are on the call, it will make a huge difference to the people who have come to listen today. ये जो आपको पिक्चर्स दिखा रहे हैं इसमें ये है कि एक जो हमारी जो ऑर्गन डोनेशन कोऑर्डिनेटर है अजिमोल प्रदीप, उन्होंने काफी काम किया है हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, सबके साथ, कि भाई आपको ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। एंड उसको एक्चुअली क्वीन का पुरस्कार मिला था ये साल ये काम करने के लिए।
हमने ये पिक्चर लेस्टर सिटी का इसलिए नहीं लगाया क्योंकि लेस्टर एफए कप जीत गई कल, पर लेकिन इसलिए लगाया कि ये जो लेडी है आपके सामने वो एक हिलरी पटेल करके है, जिनका हमने ट्रांसप्लांट किया था। ट्रांसप्लांट करने के बाद 4-5 साल हो गए इसके, हर जगह जाती है, हर जगह जाके हर एक कम्युनिटी को बात करती है कि भी ऑर्गन डोनेशन क्यों करना चाहिए। तो जो ट्रांसप्लांट जिनको मिलता है वो लोग भी काफी मदद करते हैं हमारी कि भाई ये जो डोनेशन का मैसेज पास करने के लिए। हमारे कोऑर्डिनेटर्स काफी मेहनत करते हैं सबको बात करने के लिए, इंक्रीज नॉलेज। जैसे आज एंजेला आपसे बात करेगी इसके बारे में। आपने काफी सारे ऐसे पिक्चर्स देखे होंगे, बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे जो डायलिसिस पे हैं, जिंदगी में ऑर्गन मिलने के बाद उनका कितना फर्क पड़ता है। देखो उनकी जिंदगी में ये जो बच्चा है वो कैसा था और ऑर्गन डोनेशन मिलने के बाद कैसा हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 लड़कियां हैं, एक को ट्रांसप्लांट किया था, दूसरे को नहीं किया था, पर देखो फर्क नहीं पता चलता दोनों को देख के कि किसको ट्रांसप्लांट मिला था। आप इतना फर्क कर सकते लोगों को ऑर्गन डोनेशन की वजह से। ये देख सकते कि आप ऑर्गन डोनेशन करते हैं तो डोनर सिर्फ रिसिपिएंट को नहीं बेनिफिट करता है, उनके फैमिली को भी बेनिफिट करता है। जैसे ये बच्चे ने लिखा है, थैंक यू फॉर हेल्पिंग माय डैड, क्योंकि उसके डैड को ट्रांसप्लांट मिला, उससे उसको भी फर्क पड़ा। ये जो लड़की जो बीच में है, जो चेक फ्रॉक में बैठी है बीच में, उसको एक नन्ही सी जान का किडनी का डोनेशन की वजह से उसको जिंदगी मिल गई। नन्ही सी जान, 6 दिन की बच्चे की किडनी की डोनेशन की वजह से, 6 दिन। ये पहला था दुनिया यूके में, और देखो कितनी खुश है वो उसकी फैमिली के साथ। ये जो लड़की है उसको कैंसर की बीमारी थी, कैंसर की बीमारी की वजह से कई बार हम कोई लिवर का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। देखो कितना फर्क पड़ा है उसके कैंसर की वजह से लिवर ट्रांसप्लांट करने के बाद। ये जो लड़की थी जो प्रेग्नेंट थी, जब पहली बार आई थी, प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद उसको लिवर फेलियर हो गया। लिवर फेलियर होने के बाद उनको ट्रांसप्लांट किया मैंने, और उसके बाद देखो उसके दूसरा बच्चा भी हो गया। इसलिए आप काफी फर्क पड़ता है लोगों की जिंदगी में आप ऑर्गन डोनेशन देने की वजह से। ये जो लड़की है वो अहमदाबाद की है, 3 साल की थी और उसने सब ऑर्गन्स डोनेट किए उसके जाने के टाइम पे। उसके माता पिता ने कंसेंट दिया था, उसकी वजह से डोनेशन दे सकी। ये मेरा खास दोस्त है नियाज अहमद, जो हमारे साथ बहुत सारा काम किया है ऐसे ऑर्गन डोनेशन के कॉज को प्रमोट करने के लिए। बहुत ही मेहनती है, और उन्होंने वो 6 दिन की बच्ची का ऑर्गन्स लेके वो लड़की को ट्रांसप्लांट किया था। इन्फ्लुएंशियल पीपल जैसे हमने बात किया था, वो भी आपको मदद कर सकते हैं। जैसे इंडियन टीम को हमने बुलाया था जब हम लीड्स में कंसल्टेंट थे किंग्स के पहले, वहां पे पूरी इंडियन टीम आई थी ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करने, और सभी बच्चे लोग जो ट्रांसप्लांट किए थे उनको सबको मिल के सबसे बात करके ऑर्गन डोनेशन का प्रमोशन किया। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है आपको क्यों करना चाहिए, क्योंकि एक दिन आपके कोई पास के, आपके कोई ननी जान जो होगी, उनको ऑर्गन की जरूरत पड़ेगी। उस समय पे नहीं सोचना चाहिए कि भी हम ट्रांसप्लांट का डोनेशन करेंगे, और उस समय पे ये हो सकता है कि आप डोनर नहीं हो सकते और दूसरा ऑर्गन नहीं मिल सकता है उनको, और उनको भी ऑर्गन न मिलने की वजह से उनकी जान न चली जाए। इसीलिए one day it could be someone you know or even you in the need of a transplant. So it is time to actually consider it now and not wait for that perfect moment. And Angela will tell you how to do it. This is my, on conclusion, this is my own philosophy. ये कहीं कोई बुक में लिखा नहीं है, ये मेरा खुद का फिलॉसफी है। पहला बात जो हम बोलते हैं कि हम जिंदगी में 3 बोल्स है, 3 कटोरियां समझ लो। पहली कटोरी जो हम भरते हैं वो अपने पर्सनल सक्सेस को जो भरते हैं, जो हम खुद करना चाहते हैं स्वार्थ की वजह से। दूसरी कटोरी जो है वो हम हमारी फैमिली को करते हैं, जो हम आपको बोलते हैं कि बच्चों को पढ़ाई करने के लिए या पैसे देते किसी को, वो दूसरी कटोरी है। पर तीसरी जो कटोरी है वो हमेशा भूल जाते हैं हम, कि जो हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से आप ये 3 कटोरी में से कोई भी कटोरी आपकी खाली हो तो आप दुखी रहेंगे, और मोर ऑफन देन नॉट
वो इसलिए होता है कि आप दूसरों के लिए कुछ नहीं करते। ये आज एक रिलीजियस डे है, तो हम आपको एक कोट की वजह से कंक्लूड करेंगे। ये आप श्लोक सुना होगा आपने, मुखम करोति वाचालम पंकुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। इसका मतलब ये होता है कि आप जो माधव जो होता है, जो कृष्ण जी है, कि आप काफी सारा इंस्पिरेशन की वजह से कई चीजें हो सकती है। जो लेम है वो चल सकता है, जो न माउंटेन क्रॉस कर सकता है वो माउंटेन भी क्रॉस कर सकता है। इसका ये मतलब है। थैंक यू वेरी मच। Dr. Krishna, thank you very much for showing us a lovely presentation. I must say, a very lovely presentation. And thank you for showing us the real life cases that have benefited from organ donation. And I particularly liked the philosophy of the 3 bowls. I think that should be the central lesson for all of us. Thank you. Thank you very much. Thank you. Our next speaker is Miss Angela Ditchfield. Her career began in critical care many years ago, and she has worked for NHS blood and transplant for 10 years as a specialist organ donation nurse. For the last 4 years, she has been in the role of lead nurse, diversity and inclusion. Angela's passion, and you'll hear this when she starts talking, Angela's passion about reducing inequality, I beg your pardon, inequality in health comes through her very clearly, and she has supported many community projects nationally. In fact, Angela has supported the community investment scheme since it began 3 years back. She has taken time out this morning to share information about organ donation and the real importance of this on people's lives. Angela, thank you very much for joining us. On behalf of the SadhuVaswani Center UK, I thank you and welcome you to the to the Silver Sunday program. For the SadhuVaswani. For the SadhuVaswani. Thank you, and platform is yours. Welcome, Thank you. Thank you. Thank you very much for inviting me along. I really appreciate this. And I'm just going to share my screen. And I've got my presentation. There we go. Can you see that? Yes, thank you. Yeah, brilliant. Thank you. So thank you very much, everybody, for inviting me along and listening to me speak this morning. Really appreciate you, getting me to come along to the Silver Sunday. It's an absolute honour to be here to share my experience and talk about organ donation and where sort of my role and the specialist nurse's role. So a lot of this, obviously, Dr. Menon's covered, so I'll sort of skip through bits of this. But why it's so important, it is so important. You know, we know that there's lots of people dying every day in the UK, but there's only a very, very small amount of people who can actually become organ donors. Like Dr. Menon said, you've got to die in a situation where you're on an intensive care unit on a ventilator. So it's really important that everybody's given that choice if they're in that situation, but also for the people who are waiting for transplants, it's really important that we make sure we're giving people the opportunity to become donors. We know that 96% of the population would accept an organ if they needed one, but there's so many people that didn't register and that onto the organ donor register, and obviously the law has changed now, which I will come on to. Last year, there was only 8% of deceased organ donors that came from Black and Asian communities. And we know from Dr. Menon's brilliant presentation that there's a massive need. So there's a real disproportionate in the transplant waiting list and the amount of people who are actually donating at the time of the death. So we've talked about this. It's really important because people you get a better match and a better outcome, positive outcome from the transplants if the donor comes from someone from the same ethnic background as yourself. And for us, it's as specialist nurses in organ donation, it's really important that all families and all patients are given this opportunity as really good end of life care, and we're really helping them
and we want to reduce the need for inequalities. Everybody should be entitled to a life-saving transplant if they need one, but that's not always the case, and we know that people are dying on a daily basis waiting for them transplants. Going the wrong way. So the role of the specialist nurse, and this is what I do and I've done for 10 years, and with a team, there's about 260, 70 of us nationally, and we're all senior nurses. So we've all come into this role when we've already been in a senior position. We've all worked on it, majority of us worked on intensive care units or the accident and emergency department or in palliative care, that sort of background that we've come from. And we're put into hospitals and we work on critical care units like the intensive care units. And we're there to be able to make sure that all donors are identified in these areas. And we are there as a resource, so we can help to support staff and we can train staff and work with them. And we're there so that all families who are in a position to donate their loved ones' organs are spoken to about organ donation. We educate staff around the organ donation process and the patients that can actually become donors, so that we're making sure that everybody's who can be a potential donor is given that opportunity. And it says there SNODs because that's what they call as SNODs, specialist nurses organ donation. It's not a very nice term, but that's what we get called on a regular basis. So obviously Dr. Menon mentioned this, and it's what can be donated, and you know, one person can save up to 9 lives from solid organ donation, but there's also tissue donation that can save hundreds of lives and help people to, you know, improve their quality of life. So I won't go into too much detail. And obviously we know that there's been a big change in law, and that was, you know, we worked with lots of communities for, you know, many years before the organ donation law change. But when it came to the law change, we really wanted to understand what communities needed from us as the NHSBT to support them through this law change. And obviously it's Max and Kira's law, which we know, and initially Max, who got the heart transplant, it was going to be Max's law, but then he recognised that we need to celebrate that it was Kira that actually gave this gift of life to him. And so he really worked passionately with the government to really change that. So it's now Max and Kira's law, which is fantastic because it's about recognising that that little girl gave, you know, had already had a conversation with the family and decided she wanted to give her organs if she were in that situation. And tragically, she was in that situation and she gave life back to Max and saved his life. So it was amazing, and it's great that the law change now recognises that. I've got a little video, but I don't know if it'll play actually, but I'll try, and if not, I can always share this with you. But this is Max and Kira's parents. Oh, that won't help if I didn't do that. Let's see if it works. It might not. I think, Angela, you may not have shared the sound when you shared your screen. Oh, right. Okay. We can't hear it. Okay. Well, I can send that on to you so you can look. It's just about Max and Kira's parents just talking about the time when, you know, they were asked about donation. So I can share that with you all because it's quite nice to watch, and it's very emotional, but, you know, really sets the scene for organ donation. Thank you. So obviously Organ Donation Deemed Consent Act came into place in the 20th of May. So we're at a milestone now, a year down the line. And it applies to all adults who die in England and are originally resident in England for at least 12 months prior to the death. It doesn't apply to anybody under the age of 18 who lacks mental capacity to understand the law, the new law change. If you're not already a resident in the UK, and if your a donation decision has already been made. So it's our job as specialist nurses to really find out this information when we're speaking to families so that we can see if the law applies to that person or it doesn't apply. And for us, practice really hasn't changed that much in the sense that, you know, the family are pivotal in this decision making, and we go in and speak to families, and we've got to make sure they understand that obviously the laws change, and we have a discussion about if they've ever spoke to the loved one about organ donation, but ultimately it's the family's decision. So even though the laws change, we have to work with the family to make sure that that's definitely what they want, and we can work together to make sure that
the loved one's wishes are respected, either for donation or not for donation. When I was talking before about when we were working up to the law change, we worked a lot with community groups and faith groups to look at how we can support them with the law change. And what came across was that it was really important. Faith and beliefs really important, which we know that you know, especially with end of life care decision making, it's really important. And as specialist nurses, we have and always will continue to respect families' wishes. And if we make sure that they're offered pastoral care or religious support, anything that they want, then we'll try and do that for them at that time. So we work very closely with the chaplaincy teams within the hospital, with faith leaders in the community, so that if the family want, we can bring them in at that point. But as we recognise that, we wanted to make sure we made certain that that statement was taken into consideration. So the Faith and Beliefs Declaration was put onto the Organ Donor Register in 2018. So now people can sign onto the register, but they can also make a declaration that their faith and beliefs is really important, and that we recognise that when we're talking about organ donation, and make sure that we're in line with their faith and beliefs, so that organ donation can go ahead at the end of life. So that was something that we brought into faith. And like Dr. Menon said, we've worked with lots of faith leaders over time, and there's been lots of research done and lots of discussions and debates around organ donation. And we know that all major religions do not object to organ donation, but there's obviously different schools of thought in certain religions. And we work with communities to try and you know, make sure they've got the correct information and there's no myths and misconceptions around what organ donation is. So I've put a few myths and misconceptions on that we find when we're speaking to families. So anyone can be an organ donor after the death, and we know that that's not true. Dr. Menon mentioned in his presentation about the types of donation. So for an organ donor at the time of the death, you've got to be in a situation where you're on an intensive care unit, on a ventilator, which is assisting your breathing. And you've got to be at the point where you're at end of life. So there's only a very small percentage, like I've already mentioned. If you want to be a donor, then the doctors won't do the best to try and save you, which is very common. And again, mistrust within the NHS and from certain communities, you know, it's ingrained into the culture. And from it's really important that we make sure that people know that that's definitely not true. We work for the specialist nurses, we work for NHS Blood and Transplant. We're completely separate to the doctors that look after the patients on the intensive care unit. We're just a guest in their hospital, working with them to support them, to make sure that families are getting the best end of life care. So we're completely separate. And the doctors don't make the decisions to stop the treatment lightly. You know, this is where someone they cannot save, and they do their very best to try and save everybody. And if it happens that they can't, because they can't always do that, then that's when we come in. We know that it's a part of end of life, and that's only when we're invited in to speak to the families. You need to be registered on the NHS Organ Donor Register to become a donor, and we know that's not true. And obviously the law has changed now, so you can register if you really, really want to be an organ donor, and you really want to make everybody know that you're an organ donor. You talk about that with your family, and you can sign on to the register. But if you don't do anything, you've got to meet the criteria of the deemed consent. But again, like I said before, we always have these really crucial discussions with family, and we don't go against families' wishes. It's a very difficult time, and that's why it's so important to talk to families and people now about what you would want. Have that discussion, really think about it, find out about it, research about it, everything you need to know, and then make that decision and discuss that with your family. Because many times we go in front of families and they really struggle to think about what their loved one would want, because they've never had that discussion. And usually they'll go, you know, with well, we didn't know what they want, so we won't go with organ donation. So it's crucial to have that discussion, because it's too late when they're sat in front of us as specialist nurses. You know, they don't want them to have that extra added stress of thinking about what the loved one would want. Organ donation delays the funeral. It doesn't delay any funerals, and we do appreciate that some faiths and beliefs have specific rules around funerals. So we make sure that we work with the hospitals, with the doctors. Sometimes, like with the Muslim community and the Jewish community, we can get the death certificate ready, as long as there's nothing that's stopping that
for instance, if the coroner was involved, if there was any concerns there, we'd make sure that we try our best to really help the family, to really, whatever they would need at that point, we'll do our best to try and do that, so that once organ donation's finished, they can take the body ready for the funeral. Families always honour relatives' decisions to donate. Again, that's not true. And we know from many of times that I've sat in front of families who maybe the patient had registered on the organ donor register and shared their wish even, and the families then go against that decision. And it's such a difficult time. You know, they're facing the loss of a loved one, they're acutely bereaved, and it's our job to really make sure that they understand, give them the right information and work with them to try and honour the loved one's wish. But sometimes families just can't go ahead with that, and we have to respect that. If you donate, you can't have an open casket funeral. Again, that's not true. It's an operation like any other operation, and carried out by extremely skilled and expert surgeons like Dr. Menon, and very well respected. The surgery is extremely respectful, and it's you know, obviously it's an incision, but that's covered up like normal, and the families can still see the loved one after the donation. So obviously, coming to the end of the talk, it's Leave Them Certain. That's our campaign, and it's about talking and really having that conversation about what you would want, if you would want at the end of your life to go on and save someone else's life. And it's not just only, you know, saves a life, it's the family that's surrounding that person, and it's society, because it means people can go back to work. So it's a huge, massive gift that people give, and it just astounds me on a daily basis when I'm sat with families in such you know, devastated families losing someone they love, and they're so selfless and think of others, and then go on to help others. It's just so amazing. It's an honor to do the job I do, and obviously I absolutely love it. I've been doing it for a long time now, and it's just fantastic that communities put on events like this, so we can share that message and get the information out there, and then people can have conversations. So there's a couple of links there. So the organ donor.nhs.uk that you can sign onto the register there if that's what you want, but you can get lots and lots of information. There's loads of information there that you can have a look through. And we've also got a YouTube channel that shows lots of different videos about people who've had transplants and people who've actually donated. But I can share these with you, so you've got that information to hand if you want to look more about it. But thank you so much for listening to me and allowing me to come today to share my experience in my talk. Thank you. Thank you very much, Dr. Menon and Angela, for some really interesting, informative talks there. I think we've really learned a lot today, and there's some real eye-openers as well. So thank you so much for that. We'd like to open up the session for some questions and answers. We have some already that have come through. So I'm going to invite Mrs. Prafulla Shah to join us as well. So Ms. Prafulla Shah has been instrumental in helping us to get this program off the ground. She's been a key advisor in helping us move forward, and we thank you for that as well. So on with the first question. I have a question here. It says, how does life change for the donor who is living? Ms. Prafulla, would you mind taking that on, please? Oh, you're on mute. Oh. We still can't hear you, I'm sorry. Is there a microphone issue, possibly? Okay, I'll tell you what, I'll move to the second question until Ms. Shah gets back. I've got a question here saying, can I choose which organs I can donate? Angela or Dr. Menon, please. I think let Angela go for this one. I think she's more right up her street, I think. Thank you, Doctor. Yeah, so yes, definitely. When we speak to families, obviously, if they agree to donation, then we talk through about what lives could be saved, because ultimately these people who are, you know, the patients who are on the intensive care unit and are going to donate, they're very poorly, they're very sick,
they're on an intensive care unit. So it might be that they've got some problems with a certain organ that they can't donate. So we make sure before we go and speak to the family that we've done an assessment. We know what sort of function each organ is and what is actually able to be donated, because we don't want to be going into a family saying, oh, they can donate their organs, when actually we then go back to the patient and they're too sick and they can't. We don't want to be giving them expectations that we can't actually fulfill. So we make sure we assess that patient, we look at all the medical history, we look at why they're in hospital, why they're in intensive care unit, and what it is we think they can donate. We might even call a surgeon like Dr. Menon and have a conversation about, what do you think? Do you think this person could actually potentially donate the liver? And then after we've got that information, we'll then go and speak to the family and say, this is what could be donated. And the family, if they want to just donate the kidneys, they can do, or the liver, they can do, and it's up to that individual family, and we'll make sure we support them and talk them through it, give them the information and let them make that decision. And then, there's paperwork that we have to do, which is legal paperwork, which we do with the family, and they can then specify what they want to do. A lot of families, if they want to donate, they'll be, whatever you can donate, let's help someone else, the majority of families. But there is times when families say, we'll just want to do just the kidneys or just the liver. Okay, thank you for that. Thank you. I've got another question here saying, is there an age limit to making a donation? So the answer is, I think, no. But generally, there are certain ages beyond which the organs, as you know, their function declines with age. So, for example, a kidney is from somebody who's 85. Will obviously the functional capacity is significantly reduced, and same goes to the liver. So there isn't a ballpark figure we use, but it depends on just not the age, but also the other factors, like a 75-year-old who's got very good fitness and has been fit through their life would be suitable to donate a lot of their organs. Mm-hmm. But a 75-year-old equally who's had a lot of other medical problems may not be fit to donate any organs. So I think to some extent it is not age specific, although once you get to the over 75s, you have to be a really good donor to be able to donate. And you may not be able to donate the organs as such, but you could donate something like corneas, etc. So I think not all is it's all related to the age and the comorbidities that come with it. Thank you so much, Dr. Menon. Ms. Praful, have we got you on unmute now? I'll try unmuting you again. Let's give that another go. Can we hear you now? No, for some reason your voice is not coming through. Okay. Do you want me to just start off with that particular question, and then Prafula can join in and add in from a personal experience point of view? So I think from what I understand, the person who's asking the question is, when you become a living donor, and let's take the example of a kidney. If you were to donate a kidney as a living donor at the age of 40, does it affect your life subsequently? Yeah. And the answer is, the medical data is that your life actually is not affected significantly. Your risk of developing high blood pressure is slightly increased, but other than that, overall, you do not notice much of a difference. In fact, those who've gone on to donate one kidney live a normal lifespan that they're supposed to. That's what the data suggests. So if that is, that is the medical answer. I think from a physical and a psychological point of view, I'm sure Prafula is in a better position to answer that. Okay. So, because I know when my microphone doesn't work, it's usually because the setting is not right. So maybe it's a setting issue, Prafula, on the microphone section. Angela, do you want to add anything to that? No, I think you've covered that. I think, obviously I work on the side of the people who are donating, but so you've got more expertise than me, Doctor. Think, Jessica, can you hear me now? There you go. Yes, there you go. That's great. I'm sorry about that technology when it works, right? So great question. Angie, thank you for stepping in there and answering it from the perspective of the process. Thank you, Mr. Menon. I'm going to call you Mr. because you are a consultant. So,
Mr. Menon stepped in there to kind of talk about, what it means in terms of health. But, I donated my kidney 3 years ago, my left kidney, to my niece because she was about to start dialysis. And I feel absolutely fine. Obviously, we have to take care of ourselves as in any other situation. Psychologically, it does affect you. And you are in a kind of a very different space after that donation. So it's all about really the personal choice that you make, and then seeking the support that you may need from the professionals at the hospitals. And you talked about the help that is given to us is from our coordinators at the hospitals, and they go through the entire process with you. So you are actually still their number one priority. So आपकी सारी टेस्ट होती है, बॉडी की आंखें मोटी हो जाती है, और फिर जो आप डोनेट करने के लिए ओके होते हैं, only then वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. So इसमें ऐसा नहीं होता है कि आप आपका निर्णय बताते हैं और सब कुछ हो जाता है. थोड़ा टाइम लगता है. So they do a lot of tests. I had probably about 2 body MOTs in the time that, I chose to donate. I also wasn't a direct match to my niece. So we went through something called the kidney sharing scheme that operates in the UK. And I'll explain this just really briefly because I know we're up against time a little bit today. Essentially, it's like a computer program. So जो लोग किसी और के लिए डोनेट करने चाहते हैं, वो कंप्यूटर में उसके डिटेल्स जाते हैं, alongside जो और लोग होते हैं UK wide, उसके डिटेल्स भी जाते हैं, और 4 times a year ये डिटेल्स देख जाते हैं और कंप्यूटर का प्रोग्राम डिसाइड करते हैं कि कोई मैच है कि नहीं. हमारी केस में मेरी नीस को और मुझे पहले ही राउंड में मैच मिला था. उसके लिए किसी ने डोनेट किया है किडनी, पता नहीं कहाँ से आई है, और मेरी किडनी गई है, मुझे भी पता नहीं है कहाँ गई है. मुझे यही पता है कि जिसको गई है वो उसकी उम्र 40 साल करीबन ऐसी थे और उसके 2 छोटे बच्चे हैं. सो उसकी लाइफ completely change हुई है इस डोनेशन से. And when we donate, that's actually the reason we do it. It's to improve the life of the other person. So living donation absolutely मैं advocate करती हूँ क्योंकि मैंने ऐसा किया है. लेकिन as an ambassador for NHS Blood and Transplant, हम ये events करते हैं कृष्ण मेनन के साथ, अंजी के साथ, और किस ऐसे भी लोग हमारे ambassadors हैं. So awareness raise करने के लिए कि donation after death also बहुत important है. आपने देखा मिस्टर मैनन की स्लाइड्स में कितने सारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं ऑर्गन्स के लिए, और वेट करते घने कितने सारे लोग मर भी जाते हैं. और हमारी कम्युनिटी में ऐसा बहुत होता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम ये काम करें. सेवा का काम है, खूबज पुण्य का काम है. सो आज का ये टॉपिक है. हम दूसरे भी टॉपिक्स कवर करेंगे. सो कोई क्वेश्चंस होता है तो प्लीज ये क्वेश्चंस यहाँ रखें या फिर दूसरे टॉपिक में हम कवर करेंगे. थैंक यू so much. Thank you. Thank you for your personal experience. Thank you very much for that. There's one more question here, which I will read as written. Please educate us with a real-time example as to what happens after the death. I mean, how organ donation process happens, what support is required from the family at that time. I think, Angela, you're probably best starting off with this one. And then what I will do is it's almost like I'm at the other end of the call that she's going to make to me, and we will take you through a real life scenario of how to do it. Yeah. Is that okay, Angela? Yep, no problem. So we obviously someone's been identified at the end of life, and we'll check everything and make sure they're suitable to donate, and then we'll speak to the family. We'll go in and spend some time with them. There's no rush. We have good conversations, and we'll decide what it is. Did the patient want to be a donor? Is that what the family want? The family say yes to donation. We might give them some time, and then we'd do some paperwork. Like I said, it's the Human Tissue Authority who regulates us as an organisation. So we've got to go through that with the family. That's very important.
We talk to the family about the medical history of the person, the travel history, the behavioural history. And we do that in a really nice conversation and spend time with them. We learn about the patient, and then we send some bloods away to be matched. So, you know, when I said about the transplant being the match, good match from someone from the same ethnic background, we'll send that away, and that'll do a matching, then start matching and looking at the transplant waiting list and see who can be suitable. We'd collect all the information about the medical history through the notes and of the patient, the medical notes. We'd speak to the GP. We'll do another blood test just to make sure about any infections that the patient may have had previously, which we need to tell the transplant surgeons about. And then when we get to the point where we've collated and collected all that information, whilst obviously speaking to the family, updating them, supporting them in whatever way we can, making sure the doctors on the intensive care unit know what's going on. Then we'd put it all onto an app now, because we're all technical, and then we put it onto an app, and then the surgeons can see that. So Mr. Menon could see that, and he could look through all that information, and then we'd speak to the surgeons, speak to the transplant coordinators, make sure they've got a match. And then when we've got this match for whatever organ, we'd ring up and say, can we have a team of specialist surgeons to come to this hospital to do the operation for this person? And we'd wait for them to come to the hospital, and then they'd go into theatre and get themselves ready. We'd support the family, make sure that they know what's going on, the time frames, because it doesn't happen straight away. It takes a number of hours while we're doing all this information, collecting all the information, speaking to the surgeons. You know, so in that time, the family can spend precious time together, you know, extra special time together, and we'll make sure we do whatever we can from that reason. And then when everybody's ready and the surgeons are all ready, then we take the patient to the theatre for the operation, and then Dr. Menon come along. Yeah, so I think, you know, and once so there's two things here. One is the team that will come to retrieve the organs, which is to take the organs that have been offered and kindly donated by the donor and the patient's family. And that team is in direct communication with the team that's going to do the transplants. And sometimes, you know, the organs are going to different parts of the country. So I think there has to be a lot of coordination. And Angela's job is probably one of the most hardest jobs in the country, because she will have surgeons from the north of England saying, can we delay the donation because we are not ready with the heart recipient yet? So the practical side of it and the logistics that are behind the scenes are just phenomenal. You cannot even imagine, which is why we are so immensely grateful to families who come forward as donors, because they sometimes have to face the same delays that may be occurring because, you know, we're not ready. And the readiness is because perhaps the best example to give is the heart, where, you know, if you have to donate the heart has to be put in straight away. So the donor team and the recipient team have to coordinate with each other really well. So I think, the retrieval team or the P team who come and with great dignity will retrieve all the organs and look after your loved one when they finish with your donation process. And after that, the organs, when they come to the hospitals where the organs have been accepted, then they get transplanted. So I think, you know, that's the kind of process. But at all stages, I must say, the hardest job is for people like Angela, who are at what we call the shop floor or the hard end of the entire process. And that is why we have to maintain that communication level with you as a family. And I think, as she rightly said, we make sure at all stages the family are so well informed, and we respect your wishes throughout the entire process. Thank you so much. Thank you very much. There's one final question, and I think it's to do with historical diseases. For example, if you've had cancer in the past or you've had COVID recently, are those the sorts of things that would exempt you from giving organs? Question. So Angela, do you want me to answer that? Yeah, you can do, yeah. So cancers, what we do is there are set criteria, okay? So which cancers are excluded completely and a complete no-no. And there are some other cancers where we would say, if there is enough interval between the treatment for the cancer and the donation process, then we would consider them. So by all means, having a cancer by itself is not a contraindication to donation. So I think, you know,
You can still register as a donor, and then we will go through the process, and then Angela will speak to the surgeons and come back and say, look, in this particular instance, because of this history, we can't take the liver, but we could use the other organ. So that's the way it works. With regards to COVID, again, this is a learning process that we had from the first surge to the second surge. First surge, we did not take any organs initially because we were unsure about our footing in terms of what happens to the recipient. Will they get COVID? We didn't know because it was all new for us in the pandemic. But now again, there are set criteria. What happens is once they are COVID test negative, then we would take them. And I'll allow Angela to expand on that a little bit. Yeah, thanks, Mr. Menon. Yeah, like Mr. Menon said, we're really learning about COVID, and we've got special criteria that we've got to go through, and forms we've got to fill in, and people we've got to speak to. So if someone's previously had COVID, it's not necessarily that they can't donate then, you know, if it's like months down the line. So we do lots of testing, lots of working with the virology consultant who works for NHSBT, and lots of other doctors who we speak to at that time. So as we continue, we just learn more and more, and we adjust our practices. But what we don't want to do is, you know, we want to make sure that people waiting for transplants are getting them transplants. So that's the most important thing. So just carry on doing what we're doing and learning from as we move along. I thought that was a final question, but one person sneaked one more in there. If you've had kidney disease in the past, are you still able to donate? That's a final question. So I was actually typing in the answer because I thought, but no, the answer is that if you got background kidney disease, then you would not probably be able to donate your kidneys. Right. But again, it's whether both kidneys have been affected equally, etc. So I think there are several factors, but in generality, once you got kidney disease, you may not be able to donate your kidneys, but you could donate other organs. And that's equally important to emphasize that we got a lot of people who had kidney disease and even been on dialysis, but are able to donate their liver. So I think, you know. It's amazing. Yeah. Can I thank you all so much for an amazing session today. I've learned very much myself. I'm sure many people have learned a lot. And I'm now going to hand over to Mr. Ram Kundanani, who has been instrumental and a key player in bringing the NHS donation project to our table. So Ram, can I hand over to you? You've been instrumental and everything in this. So please unmute yourself and take over. Thank you, Sudha. So we had enlightening session from Dr. Menon and Ms. Angela. Before I move on, I want to say two things about the organ donation side. One, in the chat group, you see the link which has been shared, and I request the team to share that link again. And you can click on the link to know more about organ donation. And the second thing is, if any of you want to donate the organs, or at least if you want to pledge to donate the organs, then please get in touch with either Deepuji, Mr. Deepu Mirpuri, or Mrs. Gitanjali Mirpuri, or those who see on the screen in this shirt, in this t-shirt. We all are associated with this project very closely, and we will help you to proceed with your request, and we can help NHS and the society by and large. So with that note, I will now move on to a little lighter side, which is the entertainment. Silver Sunday has always had this two parts. One is the entertainment, and second, the health-related subject. So we covered the health-related subject, now the entertainment. For entertainment, we have a team from India, a place called Surat, which is processing more than 80% of the global diamond creation in the world. So we have Dr. Gaurang Mehta. He is professionally a doctor for more than 30 years, and he has a great passion for music. He has been
singing on a number of different platforms, but I would like to focus on one particular area, which is organizing one concert in a year where the musicians and the singers are all doctors. In the audience, there are two groups. One group is the paid group, which is the doctors and their families. The second group is 1,500 elderly people picked up from different care homes across the city. They are brought in 20 different buses, 1,500 people, and they are taken care of very well to entertain them, and that's a very noble cause. So that's the activity of Dr. Mehta. Along with him is another team member. You can see on the screen is Dr. Isha Mehta. She is his daughter, and she is a specialist with the physiotherapy, and she will be assisting Dr. Mehta in this entertainment program. They are going to take us in the journey of our life. You know, the audience is of mixed age group on this platform today, but they will be singing. They will be entertaining us in different ways. That's on the singing side. The anchor for the evening is Miss Amrapali Ben Desai. I want to share three things about her. First, she started a career in the banking industry, and then she moved on to All India Radio. And in All India Radio, she was involved with all different aspects of the All India Radio, starting with the program creation to program delivery. And finally, when she retired, she was the director of All India Radio. So that's one part. Second part is that she has a passion to help people to deal with the mental health issues. And she, after retirement, has started something called Gupshup, meaning chit chat. And what she does in that session is basically counseling people who are going through difficult times, be a child, be the elderly person. And all that she does is help understand their problems and then guide them as to what they should do. It's basically a counseling session. Prior to pandemic, it was more face-to-face. During and after pandemic, it is face-to-face as well as online. So you can get in touch with me and I'll introduce you with her. And the third part is related to the program itself, organ donation. We are talking about organ donation today. But when her father passed away, they donated the whole body to this hospital. So they donated the whole body, all the organs that the hospital could use. That was such a noble cause. And even today, based on her philosophy, she does not spend money on the religious ceremonies for the death anniversary. Instead, she would go to one of the care homes, either mainly for the children, and she will spend all the money that otherwise she would spend on the religious ceremony for the upkeep of those children. That's her passion. With this note, I hand over the platform to Ms. Amrapali Ben Desai, and then she will guide us through the rest of the program. And this is a fun program. This is an entertainment program. When we all eat our lunch or dinner, we sit in front of television. Today, I request you to carry on eating, carry on drinking, and enjoy the program. And let's make this as a special day with this program. Thank you. Over to you, Amrapali Ben. Thank you, Ram. नमस्कार. साधु वासवाणी केंद्र लंदन द्वारा आयोजित वर्चुअल सिल्वर संडे काम की बात तो कर चुका. अब इस महफिल में आप सभी का स्वागत है. संगीत की इस महफिल में हमारे मन को छू लेने वाले गाने लेकर आ रहे हैं सूरत से डॉक्टर गौरांग मेहता और उनकी टीम.
ये गाने हमारे जीवन के उन लम्हों की यादों को ताजा करते हैं जो कभी सबसे खूबसूरत लम्हा था। वो मस्ती, वो अल्लड़पन और उस समय की सबसे बड़ी ख्वाहिश, प्यार ही जीवन है। समय के साथ सब कुछ बह गया, तो चलो आज दोबारा उन लम्हों को याद करते हैं, जीते हैं और गुनगुनाते हैं। मैं सूरत से आम्रपाली इस महफिल में कलाकारों और आपको जोड़ने का काम करूंगी। और आप कहेंगे कुछ लोग बिल्कुल मरहम की तरह होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल मरहम की तरह होते हैं, उनसे मिलते ही दिल को सुकून आ जाता है। तो शुरू करते हैं प्रार्थना से डॉक्टर गौरांग और ईशा मेहता के आवाज में। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के वो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे बनी जिंदगी दे। बैर रहना किसी का किसी से, भावना में बदले की होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। घर हो, संस्था हो या हमारा जीवन हो, जब सब ठीक ठाक चल रहा होता है तो हमें लगता है कि सब कुछ अपने आप सही हो रहा है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति अगर एक हट जाती है तो खोकर पता चलता है कीमत किसी की। खोकर पता चलता है कीमत किसी की, पास अगर हो तो एहसास कहाँ होता है, पास अगर हो तो एहसास कहाँ होता है। पीटर रुदवानी ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत काम किया है हमारे सेंटर के लिए। उनके काम की सराहना करते हुए
उनको स्मरण करते, स्वरांजलि देते हुए डॉक्टर गौरांग के स्वर में इस गीत के साथ उनको याद करते हैं। जिंदगी का सफर है ऐसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ऐसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते जमाने में आए मगर, हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। जाएंगे पर इधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। लेकिन कुंदन सिद्धार्थ की एक रचना पेश कर रही हूँ। वो क्या कहते हैं? मैंने फूल देखे, फिर मैंने उन्हीं फूलों को अपने भीतर खिलते देखा। मैंने फूल देखे, फिर मैंने उन्हीं फूलों को अपने भीतर खिलते देखा। मैंने पेड़ देखे और मैंने उन्हीं पेड़ों के हरेपन को अपने भीतर उमगते देखा। मैं नदी में उतरा, अब नदी भी बहने लगी मेरे भीतर। मैंने चिड़ियों को गाते सुना, गीत अब भीतर उठ रहे थे। यूं बाहर जो भी जिया, उसने भीतर कितना भर दिया। यूं बाहर जो भी मैं जिया, उसने भीतर कितना भर दिया। ये कुदरत ही तो है जो हमें भीतर से भी भर देती है। और तब मन गुनगुनाने लगता है डॉक्टर गौरांग की आवाज में। मेरी मंजिल कहाँ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। ओ मंजिल, मेरी मंजिल कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा
चली आज मेरी सांसों में महक रहा है तेरा गजरा आज मेरी रातों में महक रहा है तेरा गजरा ओ आज मेरी सांसों में महक रहा है तेरा गजरा आज मेरी रातों में महक रहा है तेरा गजरा ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ चली मेरे अरमानों पे पंख लगा के कहाँ चली हाँ, हंसने की बात करते हैं। अब प्यार के गीत गाएंगे तो शादी करने का भी मन तो करेगा ना, लेकिन क्या करें, इस कोरोना काल में भारत में शादी करने के शरीक होने के लिए सिर्फ 50 लोगों की ही परमिशन है। अब क्या हुआ, एक दूल्हे ने ये सारे कानून मंजूर किए और उसने मास्क भी पहना, सोशल डिस्टेंसिंग भी लगाई और घोड़े पे सवार हो गया। घोड़े पे सवार होके जब उसने बारातियों की तरफ देखा तो उसको ऐसा फील आया कि जब वो बचपन में अली बाबा और 40 चोर की कहानी पढ़ता था तो वो उसके आंख के सामने आ गया। उसको लगा कि वो अली बाबा है और जो बाराती आए वो 40 चोर है। उस पर उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी क्या हम दुल्हन लेने जा रहे हैं या डाका डालने? अब वो तो जहां जा रहे हैं जाए, हम कहीं नहीं जा रहे। हम गाना सुन रहे हैं डॉक्टर गौरंग और ईशा मेहता के स्वर में। जान तेरे बिना मैं न रहूं
रहोगे जुदा, न होंगे जुदा, ये वादा रहा। जब से मुझे तेरा प्यार मिला, अपनी तो है बस यही दुआ, हर जन्म यूं मिल के रहेंगे, हर जन्म यूं मिल के रहेंगे। सुंदर सा अपना जान, प्यार अपना रहे सदा जवान, हम सुख दुख मिलके सहेंगे, हम सुख दुख मिलके सहेंगे। हाँ, वादा तो तब रहता है कि जब मिलते हैं। तो चलो एक माइक्रो स्टोरी सुना देती हूँ। हेलो, said an old male voice. Yes, said the old lady. I wish you would say that 30 years ago. Silence. अरे, आज भी ये बात कहने के लिए बहुत से लोग तैयार है, चाहते भी है। कोई बात नहीं, अब ऐसा करिए, बात करने की जगह गा के ही सुना दीजिए डॉक्टर गौरांग के स्वर में। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जमा है। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जमा है। हाय शराबी मौसम बहता है, तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। हाँ, भूल तो हो जाए या ना हो जाए, प्यार तो जरूर होता है।
तो एक कविता सुनाती हूँ। प्रेम आया तो वसंत आया पहली बार, प्रेम आया तो वसंत आया पहली बार, रंग प्रेम करने वालों की ही इर्जाद है। फूल पहली बार प्रेमियों के सामने खिले होंगे, पहली बार जब कोयल कूकी, पुकारा पपीहरा, निहारा चकोर, तब वे प्रेम में थे। रची गई जब पहली कथा, पहली कविता जब धरती पर उतरी, बीज बना होगा प्रेम, भक्ति जगी होगी प्रेम में ही उठे होंगे प्रार्थना के स्वर, किसी चेहरे पर आई होगी हंसी प्रेम में ही मुस्कुराए होंगे किसी के होठ पहली बार, आंसू गिरे होंगे पहली बार प्रेम के वियोग में, प्रेमी ने ही गाया होगा पहला गीत। तो आइए सुनते हैं ये गाना डॉक्टर गौरांग मेहता के स्वर में। जो मोहब्बत है ये उनका और महबूब क्या जो बस लेते भूलना, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। मेरे खुदा दिल से कोई किसी के न खेले, टूटे अगर सागर गया सागर कोई ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के न खेले, दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका और महबूब क्या चो बस लेते भूलना, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। हाँ, प्यार करो या ना करो, लेकिन प्यार जब संसार में तब्दील हो जाता है तो उसमें घर का काम भी आता है और घर के लिए कमाई की बातें भी आती है। आजकल क्या हो गया है कि ज्यादातर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो अब पतिदेव भी घर में है और वो भी काम में हाथ बटाने के लिए तैयार रहते। वैसे तो ये बात अच्छी है, लेकिन हमारी सोच ऐसी है कि घर में रहकर रोज कचरा पोछा बर्तन करने की बात करे तो करने में तो आपत्ति नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि ये कैटेगरिकली लो साउंड करता है। तो पति ने पत्नी से कहा कि अगर उसकी बजाय तुम क्वारंटाइन वर्कआउट करे कहो
तो थोड़ा स्टैंडर्ड भी बना रहेगा और स्वाभिमान भी बना रहेगा। अरे भाई, क्या कह के भी अगर वर्कआउट जिंदगी भर चालू रहता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। और ईशा, गाती रहो। जब मन खाली हो, उदास हो, तो लगता है कि कोई दोस्त होना चाहिए। और दोस्त मिलता है तो कभी कभी इरादा सिर्फ दोस्ती का होता है, कभी कभी इरादा सिर्फ दोस्ती का होता है और पता ही नहीं चलता कब प्यार हो गया। डॉक्टर गौरांग और ईशा मेहता की आवाज में ये गाना। कोरा कागज था ये मन मेरा मेरा मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा तेरा तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। सुना कागज था जीवन मेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा।
खाली कर पन्हाए मन मेरा रच गया रूप इसमें तेरा कोरा कागज भरे मेरा लिख लिया नाम इस पे तेरा कोरा कागज था ये मन मेरा लिख लिया नाम इसमें तेरा हाँ, जब कोरा कागज होता है और नाम लिखने का मन तो बहुत करता है, लेकिन फिर आगे क्या होता है ये कहानी सुनिए। मॉम एंड डैड स्माइलिंग, शी कीप्स गोइंग बैक, इट्स द ओनली प्लेस, दे डोंट क्वारल। आखिर जिंदगी तो यही है, सही है ना? ये घर घर की कहानी है और मेरी जुबानी है ना? सुनते हैं गौरंग और ईशा की आवाज में ये गाना। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक, सूरज होगा जब तक नील गगन में। बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम प्यार से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो।
खूबसूरत शेर पेश करती हूँ। चलो फिर से कहते हैं, तुम मिनट वाली सुई बनना और मैं घंटे वाली। तुम मिनट वाली सुई बनना और मैं घंटे वाली। जब वक्त ठीक होगा तो जरूर मिलेंगे। तो सुनते हैं डॉक्टर गौरंग के स्वर में ये गाना। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई भोजन सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी यूं ही जब हुई भोजन सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी मचलते यार सचलते छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। अपना मन अपना ही होके सहे, दर्द बनाए दर्द बनाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। हाँ, तो दुल्हन वाली शाम किसने देखी क्या पता, लेकिन एक मन छूने वाली कहानी आज मैं लेके आपके सामने पेश कर रही हूँ। I think we should talk him to visit his grandparents. Why now he refers to them as sky? जब बच्चे विदेश और पेरेंट्स देश में रहते हो तो ये तो होना ही था।
पेरेंट्स मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, तो ये होना ही था। तो अब डॉक्टर गौरांग और ईशा के स्वर में ये गाना सुनते हैं। आजकल तेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। आजकल तेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर होगी। तो क्या आजकल तेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। दो बदन एक दिल एक जान हो गए, मंजिलें एक हुई हम सफर मिल गए। दो बदन एक दिल एक जान हो गए, मंजिलें एक हुई हम सफर मिल गए। मंजिलें एक हुई हम सफर मिल गए। आजकल तेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर होगी। जो वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। हाँ, ये महफिल का अंतिम गाना है जिसे स्वर दे रहे हैं डॉक्टर गौरांग, ईशा और डॉक्टर वर्षा मेहता। तो सुनिए ये गाना।
चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा न कहना, कभी अलविदा न कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा न कहना, कभी अलविदा न कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा न कहना, कभी अलविदा न कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में झटके सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में झटके सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा न कहना, कभी अलविदा न कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा न कहना, कभी अलविदा न कहना। कभी अलविदा ना कहना, लेकिन हमेशा महफिल होती है तो वो कहीं ना कहीं खत्म तो होती है। आज इस हसीन महफिल सजाने के लिए साधु वासवाणी सेंटर लंदन का हम शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे और डॉक्टर गौरांग मेहता की टीम को आपके सामने प्रस्तुत करने का मौका देने के लिए हम श्री राम कुंदनानी के आभारी हैं। इस महफिल में अगर तकनीकी कारणों से रुकावट हुई हो तो उसके लिए हमें खेद है। फिर दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद। Thank you very, very much. I think we've had a wonderful session today, and we would like to allow all of you to participate and give our wonderful performers a round of applause. So if you could unmute, and we'll all be able to give them a wonderful round of applause. Thank you very much. Round of applause so they can hear. Thank you. Thank you. We hope that you have all had all your questions answered on organ donation, and any doubts that you have been removed. We're looking, if you have any further questions, please get in touch with anybody with a pink t-shirt or at the SadhuVaswani Center. Anjali, can you unmute, please? Sorry. Thank you. No problem. Signing up to the program is easy. You can do so using the link that has been posted in the chat on this meeting, or you can go onto the NHS website, or you can sign up via the NHS app. If you have any issues, please do not hesitate to get in touch with any of the NHS team members on this call. Our thanks to Prafula Ben Shah, who has helped us put this wonderful program together, and to Mr. Krishna Menon and Angela Ditchfield. Let's all become givers and donors in this world. We are very, very grateful to Ms. Amrapali Desai for peppering her wonderful anecdotes and little stories into the musical program.
which has just served to enhance it. Our thanks to Dr. Gaurang Mehta and Isha Mehta, and in fact, the very talented Mehta family. You've entertained us with your delightful songs and taken us on a melodious journey this afternoon. It's been such fun, and I, for one, have been dancing. Thank you. A huge thank you to all of our speakers today, and most importantly, to you for attending our session. Silver Sunday wouldn't be Silver Sunday without each and every one of you. Can I please apologize? We did run significantly late, so our apologies to Dr. Gaurang and his family and Ms. Amrapali and all of our attendees. I do apologize, but we've had such fun. So what a better way to spend a Sunday afternoon. A final reminder, please don't forget to register for the NHS organ donor. And there will be future Silver Sunday programs. We will be sending you details shortly. On behalf of me and the SadhuVaswani Centre, Dada Sham, and have a lovely afternoon. But before I go, I'm going to hand back to Mr. Ram Kundanani. Thank you, Anjali. So I just wanted to thank the whole of the team who has put this program together. Sudha, Anjali, Dr. Haresh, Mr. Deepu Mirpuri, the whole of the Silver Sunday team. I want to thank each one of you for making this program successful. That's all. Thank you. Thank you very much. Hope you enjoyed. You can share your comments with any of the SadhuVaswani team members, and we will take your feedback very positively. Thank you. That's all from me.